Joining us now, a fine doctor himself, Dr. Arvind Kumar, chairperson of the Center for Chest Surgery and Onco-Surgery, director of the Institute of Robotic Surgery at Sir Ganga Ram here in Delhi. Thanks very much for being with us, sir. You know, we've been talking now for a long time, several months. What are your thoughts presently from the day you heard the news until you've been fighting Corona today as a doctor, as a Corona warrior? You've been very worried, I know this personally, over a period of time. But how have your own thoughts on this illness evolved over a period of time? So my first thought is that I wish it had not happened, because it has brought the world almost to a grinding halt. It has caused so much of misery to people and to the whole world. So my first thought is that I wish it had not happened. I know for sure that it's not the last time that such a pandemic has hit this world. And now with this climate change and air pollution issue being so glaring, so important, so relevant today, I know that we are going to be hit by more and more such pandemics in times to come. So the second thought that comes to my mind instantly is that instead of reacting in an emergency way, the way we did to this pandemic, we need to make our systems ready for such pandemics, resilient to face the onslaught of such pandemics, and so I would say able to absorb the shock that life can go on normally despite this. Side by side, another important thought that comes to my mind is that we need to do something to stop the animal-human interaction, which is the cause of this. If you look back at last 20 years, whether it was SARS, whether it was SARS, whether it was MERS, whether it was Ebola, Zika, and now Corona, these are all animal viruses which have skipped species and come from animals to humans. Why has it happened? Because of increased human-animal interaction. And with now climate change being what it is, we are going to see more and more of it. And as a doctor, my biggest fear is, are we going to see more and more of such pandemics in times to come? So that's a frightening thought that I have in my mind. जी डॉक्टर अरविंद, जो अभी कोविड-19 है जिससे हम मुकाबला हम सब कर रहे हैं, 3 या 4 महीने या 7-8 महीने रहेगा हमारे सामने, क्या आपका आंकलन है? और जो हमारी मेडिकल फर्टर्निटी है, हमारे जो केयर गिवर्स हैं, उनको हम कैसे और मजबूत कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज जो हम उनके लिए कर सकते हैं वो ये है कि जो नंबर्स के प्रेडिक्शंस हैं हमारे अगले 2 महीने के बारे में, जैसे हम दिल्ली की बात करें तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 5.5 लाख केसेस और 80,000 बेड्स की रिक्वायरमेंट होगी। देश के बारे में भी बहुत तरह के मैथमेटिकल मॉडल्स आए हैं। तो मेरी पहली थॉट एज ए डॉक्टर ये है कि हम लोग आज क्या सब लोग मिल करके वो कदम 100% नहीं उठा सकते जिससे ये सारे मैथमेटिकल मॉडल्स फेल हो जाएं और हम वो नंबर हिट ही ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर जुलाई के अंत तक दिल्ली में 80,000 बेड्स रिक्वायरमेंट हुई तो किसी भी तरह से वो पूरी नहीं। तो मेरा पहला जो एक थॉट के ज्यादा मैं कहूंगा, एक मेरा भगवान से प्रार्थना है वो ये है कि कुछ ऐसा कर दो जिससे लोगों में समझ आ जाए, लोग बाहर निकलना कम कर दें, आपस में प्रिकॉशंस लें, जिससे ये संक्रमण की जो रेट है ये कम हो जाए, मैथमेटिकल मॉडल गलत प्रूव हो जाए और हम वो नंबर हिट ना करें। ये मेरी पहली थॉट है एज ए हेल्थ केयर वर्कर। उसके बाद नेक्स्ट थॉट है कि हम लोग कम से कम बीमार पड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों की सेवा कर पाए। क्या होता है कि अगर एक हेल्थ केयर वर्कर बीमार पड़ता है तो जो हेल्थ केयर का पूल है उसमें एक की कमी हो जाती है और जो पेशेंट की संख्या है उसमें एक की वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वो केयर प्रोवाइडर की जगह केयर सीकर बन जाता है। और जितने ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स बीमार होंगे उतने ही ज्यादा वो प्रोवाइडर से सीकर में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपके प्रोवाइडर्स का नंबर कम हो रहा है और सीकर्स का नंबर बढ़ रहा है।
उसी तरह से ड्यूटी करने के बाद जब लोग क्वारंटाइन में रहते हैं तो उससे भी नंबर्स कम हो जाता है। तो जैसे जैसे हमारे पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, हमें ज्यादा से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स की जरूरत है। तो सबसे पहली जरूरत है कि हमारे कम से कम हेल्थ केयर वर्कर्स बीमार हों और एक भी हेल्थ केयर वर्कर की डेथ ना हो, किसी के साथ ये दुर्घटना ना हो, लोग बीमार कम से कम हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में हम सब हेल्थ केयर वर्कर्स मिल करके अपने देशवासियों की सेवा करके देश को जल्दी से जल्दी इस महामारी से बाहर निकल पाए। ये मेरी थॉट है एज ए हेल्थ केयर वर्कर। Right, Dr. Kumar, thanks very much indeed for that.